हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज के व्लॉग में हम लोग अपना हाउस टूर आपको करवाएंगे एंड आपको दिखाएंगे कि रेंटल प्रॉपर्टीज़ यूके में कैसी होती हैं। दिस इज़ अ 3 बेड प्रॉपर्टी, सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट इनटू इट। So this is the entrance to the property. काफ़ी अच्छा यहाँ पे बाहर सिटिंग एरिया है. It's really nice weather today. Well, यूके में आजकल तो काफ़ी अच्छा 30 degrees 35 degrees easily जा रहा है. So pretty good. So this is the entrance to the property. So यहाँ से this leads to upstairs. Normally typical properties में यहाँ पे bedrooms upstairs होते हैं and जो आपका sitting in the other kitchen and stuff most likely is downstairs. So आपको पहले upstairs का view दिखाते हैं, then we'll come back downstairs and see बच्चे क्या कर रहे हैं, बेबी क्या कर रही है. So that was downstairs. And this is a bit of view from outside. So that is our main bedroom. काफ़ी यूके में गर्मी हो रही है, 30 to 40 degrees में गया. You saw it on the television as well with the news. So that thing over there is a portable air cooler. So you might need that. It's a good option. You might have it over here. So चलते हैं नेक्स्ट बेडरूम की तरफ. Due to COVID, obviously we all are so used to working from home. So same goes here. So what I did was have my separate room होना चाहिए for my office work. Most of the time I work as a network IT engineer. So घर पे ये है कि separate room. I can just have my own privacy there, just without any disturbance, work from home. So let me show you my room. This is our sitting area. So that leads directly from outside onto the right. Hello Zainab. How are you Zainab? Hey man, how are you? कैसा मेरा बेटा, ठीक है? That is our kitchen. Bit of sitting here.
Bit of storage on the left. Hello, assalamu alaikum Fatima. कैसी हैं आप? ठीक है? मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह. You want to go outside? Okay, let's go outside. So this door leads to our back garden. Come. Okay, I'm coming. Hello, Eamon. Oh, Zainab, are these your toys? Yeah. This is our back garden. Oh wow. Oh Eamon. Wow. That's a little horse. Just did the lawn moving the other day. Yeah. Need to get rid of this. So the grass bin was all full outside. There's the back view from here. So this is how a typical 3-bedroom property looks like. Bear in mind, we are renting the place. This is a rental property, so obviously when you have your own house, you can maintain it quite well. Baki rental properties, it's obviously best idea is you can manage it yourself. Koi cheez theek kharab hoti hai, just fix it, this and that. We are just actually at the edge of London, so just to give an idea, okay, how much is the rent over here? It's normally about 1,500 to 1,600 pound on average for a 3-bed property over here, but if you move inside London, that's going to be even more than that, so bear that in mind. There are other expenses in this, तो वो भी आपको बताएंगे, बल्कि कुछ सब्सक्राइबर्स ने रिक्वेस्ट की है कि एक सेपरेट वीडियो आप बनाएं जिसमें बताएं कि what are the living expenses over here, so I'll definitely show you, make a separate video for that. और आपको बताएंगे कि what are the house rent, other expenditures over here, so you have a better idea when you are planning to move over here in the UK. हाँ जी, अब हो गया है खाने का टाइम, तो देखते हैं वाइफ ने क्या बनाया. हेलो. हेलो. हेमन, खाना खा रहे हो आप? मामा ने क्या क्या बनाया? चावल और चिकन, रेड किडनी बीन्स.
चलिए खा के देखते हैं कैसा बना है। मज़ेदार। Okay, let's open it. Look at Eamon. कैसे देखती है। Wow, that's a wrap. You can you open it? Yeah, open it. आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। होपफुली आपको पसंद आया होगा। सो बिफोर वी गो, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू व्लॉग एंड अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।